Hello everyone, we are in class 12th, second chapter, inverse trigonometric function. Today we will discuss the graphical approach of tan inverse and cot inverse. In the last segment we have discussed about the graphical approach of sec inverse x, means sec inverse x, that is domain all real number excluding minus 1 to 1, and the range is 0 to pi minus pi by 2. Now come to two more inverse trigonometric function, that is tan inverse and cot inverse. tan inverse का graphical approach जानने के लिए पहले tan x. We know that domain of tan x is all real number except odd multiple of pi by 2, that is 2n plus 1 pi by 2. Okay, and range is a real number. See the graph. See, this is the graph of tan x 2.51. इसमें देखिए आप माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू 3 पाई बाई टू, इन सब में हमने एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखी है. मीन्स इन पॉइंट्स पर tan क्या होगा, नॉट डिफाइंड. ओके, सो ग्राफ क्या हो जाएगा, ब्रेक. नाउ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू देखिए आप ग्राफ. माइनस पाई बाई टू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है tan x की वो है माइनस इन्फिनिटी, और पाई बाई टू की करस्पॉन्डिंग क्या है, प्लस इन्फिनिटी. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि tan x का जो डोमेन है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और उसकी जो रेंज है द वैल्यू ऑफ tan x विल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो अगेन पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, अगेन पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, the value of x is pi by 2 to 3 pi by 2, and the value of tan x is minus infinity to plus infinity, again bijective function. So in this way, in this different interval like minus pi by 2 to pi by 2, see in the figure, and pi by 2 to 3 pi by 2, okay, if we restrict the domain, this interval means minus pi by 2 to pi by 2, so this tan x function is bijective function. So inverse, we can consider the inverse of trigonometric tan x. That's why if we restrict the domain, see, if we restrict the domain, the given branch minus 3 pi by 2 to pi by minus pi by 2, minus pi by 2 to pi by 2, then again pi by 2, 3 pi by 2, this tan function is inverse function with its range r, and then tan inverse can be defined as a function whose domain is r and range is any of this interval. So now the branch with range minus pi by 2 to pi by 2 is called principal value branch of the function. Now we define tan inverse such that r to minus pi by 2 to pi by 2 open interval. So here we can see both the graph y equal to tan x and y equal to tan inverse x. Simply if we interchange the x-axis and y-axis of the graph tan x, then we will get the graph of tan inverse x. See, tan inverse जो x ग्राफ है, इसका जो डोमेन है वो क्या हो गया, रियल नंबर. सी, x की वैल्यू देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. जो बोल्ड ब्लू कलर में ग्राफ है उसको देखिए. ओके, सो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एंड द वैल्यू ऑफ tan inverse x will be between pi by 2 to minus pi by 2. See, okay, so value of tan inverse x is minus pi by 2 to pi by 2. So means domain is real number and range is minus pi by 2 to pi by 2, because domain is the value of x and the range is the value of y on y axis. In this way, now we can consider the domain of graph of cot inverse x. See, first of all, cot function. Cot function का डोमेन क्या होता है, all real number except n pi, because cot क्या होता है, cos upon sin, and sin is 0 when x equal to n pi. So we should remove all the value n pi with real number r. So domain of cot is all real number minus n pi, and the range is r. It means cotangent function is also not bijective function. But if we restrict the domain of cotangent function to 0 pi, then it bijective with range r. Okay, in fact we can divide in any of the interval minus pi to 0, 0 to pi, like that. Okay, we will see the graph of this cot x function. See, cot x फिगर 2.61 देखिए, इसमें जो x की वैल्यू है वो 0 से पाई देखिए आप,
एक्स एक्सिस पे 0 to पाई देखिए, और ये जो ग्राफ है वो ऊपर आ रहा है, देखो प्लस इन्फिनिटी से नीचे जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, 0 to पाई, ओपन इंटरवल, बिकॉज 0 पर भी कॉट नहीं होगा, पाई पर भी कॉट नॉट डिफाइन होगा। और जो वैल्यू ऑफ कॉट एक्स है वो क्या है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन क्या हो गया, 0 to पाई, और इसकी रेंज क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, मीन्स रियल नंबर। Now, if we restrict the domain of chord between 0 to pi or pi to 2 pi or here 0 to minus pi, then this function is bijective function. So we can uh, consider the inverse of this function. See, now this graph of cot inverse x we can easily obtain by interchanging the graph of cot x, x-axis and y-axis we can interchange in the curve of y equal to cot x, then we will get the curve of y equal to cot inverse x. अब इसमें देखिए आप, cot इनवर्स x में जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, मीन्स रियल नंबर, और जो y एक्सिस पे वैल्यू है वो क्या है, 0 से पाई। ओके, तो 0 से पाई ओपन इंटरवल, तो 0 से पाई क्या होगी, इसकी रेंज। सो इस तरीके से 0 से पाई, पाई से 2 पाई, ओके। नाउ नीचे 0 से माइनस पाई, इस इंटरवल में ये फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड अगेन the function with range 0 to pi is called principal value branch. Okay, now we conclude this graphical approach. I think all of you enjoy and understand the graphical. Now please summary this table: sine inverse, domain and range. Domain sine inverse minus 1 1, and range is minus pi by 2 to pi by 2. Cos inverse minus 1 to 1, and range is 0 to pi. Cosec inverse all real number except open interval minus 1 to 1, and range is minus pi by 2 to pi by 2 excluding 0. Like that, this table we have to learn, because while calculating the value or principal value of expression, we can consider this table. So I hope you enjoy this lecture, and in the next session we will solve some problems of board questions as well as your NCERT 2.1 exercise. Till then, thank you and have a nice day.